487 multiply 327 plus minus 487 multiply 327. Now here on the right hand side, a multiply b plus a multiply c. Here is plus, here is plus. A is common, a. So what is common here beta? A is common na. Now here 327 is common. So your a is equal to 327. Clear? And what about the b beta? What is b? A multiply b. Okay. A is 327 because it is common, and b is equal to 1487. C is equal to minus 487. Clear? So this is your right hand side. Move on the left hand side beta. A is common. What is a here? 327, 327. Take it common outside. We can write here outside. And what about the b? देखो 327 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रह गया हमारे पास? 1487 साइन इज ऑफ प्लस. एंड यहाँ से भी बेटा क्या किया हमने? 327 कॉमन किया. व्हाट इज लेफ्ट? माइनस 487. क्लियर? सो 327 1487, you know very well, plus multiply minus, it will be minus 487. Clear beta? Plus multiply minus 487. 327 1487 से 487 माइनस करोगे क्या आएगा? 1000 आएगा. देन योर आंसर इज 327. Your answer is beta very simple, 327 multiplied by 1000, 3 zeros. In that way you have to solve these questions. If any term is common, you have to take it out. Okay, like 327 we have taken out. Clear beta? Beta, similarly here some properties under division of integer, some important properties. Now beta, if I have an integer a is divided by 0, then it will be undefined, or you can say it is equal to infinity. Okay beta, a divided by 0 0 नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा? undefined होगा और infinity होगा. Clear? And if any integer is divided by 1, then it will be equal to same integer, वो वही integer आएगा. Clear? You have to keep in mind. And division beta you can easily do. For example, 85 you have to divide it by 5. If I am dividing one negative number with a positive number, then answer will be a negative number. It is cancel on 17. 17 5s are 85, so it is minus 17. If both numbers are negative, for example minus 85 divided by minus 5, then minus is cancelled with minus, then I will get plus 70. Clear? Understood? Yes beta, next is very important rule, Birdmus rule. Okay, Birdmus rule. Beta, this rule is applied if there are more than one operation in any question. You know very well, in mathematics there are 4 operations: plus, minus, multiply and divide. Okay, this rule will be applied if there are more than one operation in any question. एक क्वेश्चन में बेटा एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो सकता है, और चारों के चारों भी हो सकते हैं. Then you have to proceed according to the Birdmus rule. Birdmus rule बेटा, B stand for bracket. B क्या है? ब्रैकेट. ब्रैकेट भी बेटा 3 टाइप्स की हैं. There are 3 types of brackets. This bracket is called round bracket. Okay, and this bracket is called curly bracket. This bracket is known as curly bracket. curly, curly bracket. And this bracket is known as square bracket. Okay beta, while solving the sum you have to proceed according to that order. Means first you will solve round bracket,
After solving round bracket, you will solve curly bracket. At the end, you will solve square bracket. And O for off. Off means क्या होता है बेटा? Multiplication ही होता है. Okay. For example, if I write in that way, 2 minus 5, then it is, ये क्या है बेटा? Actual में it is 2 of minus 5. Okay. Or if I write half bracket minus 5, then it is half of minus 5. Of means क्या होता है बेटा? Multiply होता है. We will proceed as like the multiply in case of off. Clear? And D stand for, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के बाद अगर कोई ऑफ है तो ऑफ सॉल्व करोगे. D stand for division, after that you will solve division. And M stand for multiplication, after division you will solve multiplication. A stand for addition, after that you will solve addition, and at the end you will solve subtraction. And very important beta, first of all, if any symbol in that question like 6 divided by 3 plus 2 multiply 5, if any win column, ऐसा सैंपल आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विन कॉलम, दैट इज कॉल्ड विन कॉलम. तो आप पहले क्या सॉल्व करोगे? विन कॉलम सॉल्व करोगे. ओके, अंडरस्टूड बेटा? पहले क्या करोगे? विन कॉलम आप सॉल्व करोगे. मींस 2 multiply 5 is equal to 10. सबसे पहले विन कॉलम, आफ्टर दैट बेटा चेक द ब्रैकेट, यू विल सॉल्व फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट. आफ्टर दैट बेटा ऑफ इफ एनी इज देयर, then division, then multiplication, then addition, then subtraction. At the end you will solve. I will take one example beta. For example, you have a question 30. Here I have 25 minus 1 upon 2, 5 plus 4 minus bracket 3 plus 2 minus 1 plus 3 win column bracket close, and here it is beta curly bracket. Okay, now first beta I tell you if any that symbol is there. Yes, here is our win column. First we will solve win column. Other question you will write as it is. विन कॉलम सॉल्व कर दो, बाकी स्टेटमेंट आप एज इट इज लिख दो बेटा. व्हाट इज अंडर विन कॉलम? 1 plus 3. 1 plus 3 क्या होगा? इक्वल टू 1 plus 3 is equal to 4. सो अवर विन कॉलम इज सॉल्व. जब आपने विन कॉलम सॉल्व कर दिया तो विन कॉलम रिमूव कर दो यहां से. देन वी विल रिमूव इट. नाउ आफ्टर दैट brackets are there. Yes, brackets are there. First bracket we will solve round bracket. This is our round bracket. यही ना आपकी, तो ये सॉल्व करोगे. 25 other statement you will write as it is. What is under the round bracket? There are 2 operation. Round bracket में भी बच्चे 2 operation है, एक प्लस है एक माइनस है. फर्स्ट बर्डमस में फर्स्ट कौन आ रहा है? ए पहले आ रहा है ना. ए फॉर एडिशन, एडिशन पहले आ रहा है, तो पहले आप क्या सॉल्व करोगे? एडिशन सॉल्व करोगे. 3 plus 2 is equal to 5. अदर स्टेटमेंट यू विल राइट एज इट इज. अभी भी आपकी क्या है बेटा? राउंड ब्रैकेट वहीं पर है. यू विल सॉल्व इट कंप्लीट. नाउ व्हाट इज अंडर द राउंड ब्रैकेट? ओनली वन ऑपरेशन. 5 minus 4 is equal to 1. देन राउंड ब्रैकेट के सभी ऑपरेशन बेटा यू हैव सॉल्व ऑल द ऑपरेशन, देन रिमूव द राउंड ब्रैकेट. रिमूव कर दो उसको. Now beta after that, after round bracket, next bracket is curly bracket. This here curly bracket, again 2 operation plus and minus, addition and subtraction. First is a, पहले आप क्या करोगे? प्लस करोगे. So 5 plus 4 is equal to 9 minus 1. Clear? Understood beta? And 25. Still curly bracket is there. 9 minus 1, it will be equal to 8. It will be equal to 8. Understood? Now all the operations are solved. Now beta curly bracket is solved. Okay, अब यहां पर क्या है? अब यहां पर क्या है? What is
हियर इज ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यहाँ पर क्यों कौन सा साइन, कोई भी साइन नहीं है ना, कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है। सो 9 - 1 इज इक्वल टू 8, 2 इज कैंसल विद 8, 2 4s are 8, so what is left beta 25 minus 4, 25 minus 4 is equal to 21, clear, understood? According to the Budmas rule you will proceed at the end, automatically you will reach on your answer, clear beta? पहले I am again explaining, first of all you will solve win column if any is there, win column solve कर दो, 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया, then bracket first turn of round bracket, अंडर राउंड ब्रैकेट 2 ऑपरेशन प्लस माइनस, फर्स्ट इज पहले ए आ रहा है ना, एडिशन इज फर्स्ट, सो फर्स्ट वी विल सॉल्व प्लस, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 - 4, स्टिल राउंड ब्रैकेट इज देयर, सो 5 - 4 इज इक्वल टू 1, अदर स्टेटमेंट यू विल राइट एज इट इज, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही आप लिखोगे। नाउ बेटा नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट इज सॉल्व, देन curly bracket is there, 2 operation again plus and minus, first we will solve plus, 5 + 4 9 minus 1, other operation write as it is. Now what is 9 - 1 8, it is cancel on 2, 2 4s are 8, so 25 - 4 is equal to 21, that is your answer, okay beta? So be prepared for the test, revise all the sums, okay beta? This is all about lesson first. Thank you.